हाय गाइस, वेलकम टू ओपीएससी वाला केमती अछंती आपण माने वेलकम टू ओएस हब केमती अछंती आपण माने सो सोशियोलॉजी ऑप्शनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन करिवा सोशियोलॉजी ऑप्शनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें डिस्कशन करिवा ता पई हमें डिटेल स्टडी करिवा ओके ता पई हमें डिटेल स्टडी करिवा सोशियोलॉजी ऑप्शनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें डिस्कशन करिवा एवं आमे देखिबा जो लास्ट ईयर जो टेस्ट सीरीज थिला ସେଇଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଡିଲ୍ କରିବା ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଆନ୍ସର ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ କରେଇବି। ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଆୱାଜ କ୍ଲିୟରଲି ଶୁଣିପାରୁଥିବ ଅଡ଼ିଓ ଇଜ୍ ଲେଟ୍ ମି नो ମୁଁ ତୁମର କମେଣ୍ଟ ଦେଖେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବି। ओके गाइस तो स्टार्ट करिवा सोशियोलॉजी ऑप्शनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें डिस्कशन करिवा। सो सोशियोलॉजी ऑप्शनल हमें टारगेट करि परिवा आमे जदि किछि एरिया टारगेट करि परिवा गोटे सिस्टमैटिक वे रे पढ़ी परिवा बहुत पिला एमती अछंती कि बहुत भलो मार्क पाई जंती 35 340 पाखा पके सोशियोलॉजी ऑप्शनल पाई जंती मार्क्स सेही अनुसार जे देखिबा हमरो कि नेक्स्ट ईयर हमर प्लानिंग जदि आमे सेही बळे जो एबे ए वर्ष मेंस खास करके जो माने दबा को चाहउछंती ट्राई करबी तुमको तुमर मार्क किछि एनहांस करिया देखो डिफरेंस हला कोन ना 320 या 320 और 330 एंड डिफरेंस हला 70 या 280 280 भी ठीक ठाक अच्छी 270 260 250 50 रु 270 280 ये रेंज रे थिबा पिला दैट इज द बेसिक भावुथुब कि यही वर्ष मुझे कम मार्क रखी नेक्स्ट ईयर आउट अधिका पढ़ीदे हो देर इज ए फंडामेंटल डिफरेंस देर इज ए फंडामेंटल प्रॉब्लम्स associated with it so let clear your doubt and try basically this process केबे पीओआई को डिस्कशन करी देन आज केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गोटे दि दिन मुझे करी देन ताऊपर मु तुम एनरिचमेंट या वैल्यू एडिशन किसी देवी सो दैट तुम्हें आगु को आम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम आणुचु मेन्स टेस्ट सीरीज मेंटरशिप देन से तुमको हेल्प मेंटरशिप रे तुमको डिटेल्स कवर हेनी सब सब्जेक्ट मेंटरशिप रे डिटेल्स सब सब्जेक्ट कवर हेनी बट सब एरिया टच है जो माने फंडामेंटल क्लासेस नुह से फाउंडेशन क्लासेस नुह बट तुम सब एरिया आम ट्राए करूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन माध्यम वैल्यू एडिशन ट्राई टू कवर इट आउट तो आज फर्स्ट मु जोटा कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा पीओआई को डिस्कसन गुटे सेकेंड पिला माने
ओके गाइस सो गोटे अर्जेंट कॉल थिला मते नबाक पड़ला सो टार्गेट हला से तो तुमको एनरिचमेंट कले कोन ना गोटे क्वेश्चंस जदी 4 5 मार्क तुम एक्स्ट्रा जदी पाई गलो सेटा या 2 मार्क 3 मार्क जदी एक्स्ट्रा पाई गलो गोटे क्वेश्चंस तर यू विल गेट डेफिनेटली बेनिफिट आउट ऑफ इट तो एटा 2023 रो जो पेपर थिला आमे पेपर 1 सोशियोलॉजी रो पेपर 1 250 मार्क्स रो थाए ग्रुप ए ग्रुप बी जानि छ टोटल 18 क्वेश्चन थाए ग्रुप ए रो 12टा क्वेश्चंस ग्रुप बी रो 6टा तो टोटल टोटल हमरो जोटा कि 18टा क्वेश्चन तो ग्रुप ए रो 12टा रु तुमको 10टा करिया पड़ियो कंपलसरी 10टा ये 6टा रु 20 मार्किया क्वेश्चन तो 6टा रु 5टा करिया गयो 5 into 20 ये 10 into 15 जोटा कि टोटल हे जो आपनकर 1 ये जानिचन समस्ते ये 100 तो टोटल 250 तो क्वेश्चंस देखंतु आज ये क्वेश्चंस देखिदेबा कोन कोन एरिया रो टच करची यूनिट 1 यूनिट 2 सो देखंतु व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी एंड इज ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोशल फेनोमेना तो या ऊपर बहुत सारा थ्योरी अछि ऑब्जेक्टिविटी कोन डिफाइन करिवे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एंड दिस वाज प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस इज आल्सो तो ओपीएससी क्वेश्चंस जोंडे कि पचारुची देखंतु यूपीएससी क्वेश्चन तो जो माने मेंटरशिप मोर नेबे मु तांकू एवरी यूनिट वाइज यूपीएससी रो क्वेश्चंस भी सॉल्व करे ओके तो आपण ता पई ओरिड हेबे नाही तो जो माने मेंटरशिप ने तांकर फायदा हला कोन ना गुडे पर्सपेक्टिव पाइबे कि ओपीएससी मोर और लेस सोशियोलॉजी रो जदी आमे स्ट्रेटजी देखिबा यूपीएससी रो प्रीवियस आमे 8 10 वर्ष रो प्रीवियस ईयर सॉल्व करबा एंड एज वेल एज ओपीएससी रो लास्ट 2 वर्ष रे केन ओपीएससी रे या पूर्व जो क्वेश्चंस थिला आपण माने समस्त जानि जंती कि टिके अलग मेथड थिला बट हां क्वेश्चंस आमे पारी परिबा क्वेश्चंस तारो क्वेश्चंस को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मोस्टली थिला then discuss the concept of pattern variable with example देखो this is also straight forward question sociology only one thing you need to cover the full syllabus. If you have covered the full syllabus and some kind of have remember about the thinkers and current affairs this is the best option to and to 350 not far okay then again define social distance and describe the importance characteristics describe the importance characteristics okay social distance kono describe the importance important characteristics taro social distance what is difference between sect and cult आज 5टा क्वेश्चंस आपनकर सॉल्व करियो ट्राई करबी what is the relationship between authority and legitimacy max weber नहीं these are questions हमें आगु को पढ़िबा हमें even again देखो what do you how do reference group influence the behavior ये थ्योरी देथिले रेफरेंस ग्रुप ये कोइ परिबे who gave the theory रेफरेंस ग्रुप थ्योरी किए देथिले ये सर ओएस नोटिफिकेशन आसी जीवो डिसेंबर रे हमर प्रियांशु प्रियांशु कोर्स फी रिलेटेड तुम्हें 8 नंबर रे मु नंबर दे दूची कांटेक्ट कर देबो तले तुम्हें डिटेल्स पाई जीवो प्रियांशु वेरी गुड पीजी सोशियोलॉजी बहुत बढ़िया कोर्स फी करते ओम प्रकाश सॉरी प्रियांशु को ओम प्रकाश आल्सो आई हैव गिवन द नंबर यू कैन कांटेक्ट दिस ऑफिस ओके देन हाउ टू रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस बिहेवियर साइड एग्जांपल सो ये देखंतु ये भी कोन थिंक कर देथिले रेफरेंस ग्रुप दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओएस 2026 रो नोटिफिकेशन नुह प्रियांशु तुमरो 25 रो नोटिफिकेशन आसीबो ये प्रियांशु पीजी सोशियोलॉजी कौन थे करुचलो कौन कॉलेज रे करूचो प्रकाश महंत तुमको नंबर दे देली कथा ही जीवो समस्ते जो माने देखुचंती क्वेश्चंस देखंतु बहुत बढ़िया क्वेश्चंस केवल देखंतु 4टा यूनिट फर्स्ट 4टा यूनिट रे
objectivity, value neutrality अछि. Then discuss concept of pattern variable, social distance, other unit. Then difference between sex and cults. आगु देखिया religion system जोटा कि हमर अछि religion उपरे. Then relationship between authority and legitimacy. जेटा thinker part रे Max Weber रो. Direct Max Weber mention करिनी, but you have to write about the Max Weber authority legitimacy. Then how do reference group influence the behavior? This is also part of the say unit uh, first 5 unit content analysis. Also say first 5 unit with sabu achi. Durkheim distinguish between types of suicide according to relation of the actor with society. So ये भी say first 5 unit is very Merton भी question discuss the Merton's arguments that deviance results not from psychological pathological personality but from the culture and structure of the society itself. So ये भी देखो फर्स्ट 5टा यूनिट रे पाखापाखि 7-8टा क्वेश्चन सेही पार्ट रो आसुची. तो फर्स्ट से जोटा कि साइंटिफिक एनालिसिस व्हाट इज सोशल साइंस, सोशियोलॉजी एज ए साइंस, सोशियोलॉजी कंपैरिजन विथ अदर सोशल साइंस, ये सब जो फर्स्ट यूनिट देन गला, देन सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट थिंकर, ये सब आपनकर पढ़ी पारिबे. कंटेंट एनालिसिस हो, पैटर्न वेरिएबल्स हो, ये सब आपण जानी पारिबे. तो आपण मानकर ओवरऑल जो देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट पेपर 1 रो फर्स्ट 4टा यूनिट मुझे फर्स्ट 4टा यूनिट सारिया पाखापाखि मु 40टा रु 50टा क्लासेस निए. सो दैट 40टा क्लासेस तो मिनिमम निए, कहीं ना थिंकर ही 25टा क्लासेस पड़े जाए. जो देखिए थिंकर बुझिले ही पूरा पेपर 1 बुझिबे. यस रॉबर्ट मैटन, यस प्रियांशु, राइट. यस मैं कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी जो कार्ल मार्क्स देखो केते थिंकर पकई दैट प्रोमिजेस दैट हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री एक्जिस्टिंग सोसाइटी इज ए हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल. से कहिथिले जे बुझिया को चेष्टा कले कि भाई क्लास आ इकोनॉमी ह्यूमन बीइंग ऊपर से डिफाइन कले कि इकोनॉमी पर्सपेक्टिव रे से डिफाइन कले एवं इकोनॉमी को गोटे प्राइम फैक्टर धरले एवं बाय बर्थ ह्यूमन आर इकोनॉमिक मैन. तो ताकू बुझिया पई से जोटे कि कम्युनिस्टिक सॉरी आर्ली कम्युनिज्म कि थिला ओल्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिटी फॉर्म में आम रोले. देन धीरे धीरे फ्यूडाल सिस्टम आसला, देन तुम जमींदारी सिस्टम वगैरह जो देन धीरे धीरे डेवलप होला इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी. इंडस्ट्रियल सोसाइटी रे से क्लास डिवीजन कथा कहिले. Similarly, define marriage and discuss types and forms of the marriage. What provision are there in national education, new education policy with regard to education system आमर अच्छी, बट एटा करंट अफेयर्स लिंक एजुकेशन सिस्टम. तो दी तीन जिनस आपको ध्यान देवा पड़ो. 12टा क्वेश्चन आप 10टा करा पड़ो. दी तीन जिनस आप ध्यान देवा पड़ो. पेपर 1 रे खास करके गोटे है कि थिंकर को आपको भल से पढ़ा. थिंकर आई विल टेक केयर एवरी थिंकर एवरी पार्ट को डिटेल्स आम पढ़ा और विथ लिंक्ड विथ करंट अफेयर्स को जिते भल से लिंक करेंगे सेते आप मार्क भल आसो. आप जानी बहुत सारा ट्रेडिशनल वे रे लिखती आंसर लिखती, बट मुझे देखुची बहुत एवं भी मो पाख पिला कहते सर 2 वर्ष 3 वर्ष है दौरान मार्क्स से भाया होनी. दे नो द कॉन्सेप्ट बट दे डोंट नो द फंडामेंटल. तो बेसिकली केमिति वे अप्रोच करवा, केमिति करंट अफेयर्स को लिंक करवा, इंटीग्रेट करवा क्वेश्चन सहित, एंड एज वेल एज केमिति थिंकर्स को इनक्लूड करवा कौन सी टॉपिक रे. पेपर 1 is almost all topic depends on the thinker, not केवल यूनिट 4th यूनिट नुह, एवरी यूनिट रे आपन को थिंकर इंपोर्टेंस अछि. थिंकर डेफिनेशन आपन को इनक्लूड करिया को पड़िबो, देन ओनली आपन भलो मार्क्स पाई परिबे. नमस्कार नारायण. ओके, सो थिंकर सेहि में वेरी इंपोर्टेंट. देन ग्रुप बी हमें क्वेश्चन देखिबा, किछि मॉडल आंसर भी करिबा. What is globalization? These questions is one. Elaborate details the positive and negative impact of globalization. जोटा कि यूनिट 12th यूनिट रे पाई जिवो सेटा. Critically examine Durkheim theory of division of labor. Critically examine Durkheim theory of division of labor. Then explain how age, race, sex are the basis of social stratification. Okay, age, race, and sex are the basis of social stratification.
there any relationship between religion and social change? Weber's view on it. So ये B question for social stratification आसीगला. How have industrialization and urbanization altered the family and marriage system in the modern times? So marriage upre, marriage system, okay, for family and marriage need 6, 5 or 6. So changes. What do you understand? What do you understand by caste? And discuss its various characteristics in the class. Caste and class. So ये questions मैं आपनकर बिलीव करि परिबेनी आपण चाहिले सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करि आपण जदि ठीक से पढ़ी थिबे वेल स्ट्रेटेजी रे पढ़ी थिबे आपण को वेरी डिफिकल्ट लागिवो नाही बहुत किसी डिफिकल्ट ठीक अछि नारायण वेरी गुड ऑल द वेरी बेस्ट यू विल जॉइन फ्रॉम टुमारो ओके देन ये सब थिला हमर टोटल क्वेश्चंस आपण 18 क्वेश्चंस देखले क्वेश्चंस एबे गोटे क्वेश्चंस रो हमें केमिति लेखिबा देखिबा क्वेश्चंस ए क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी इज ऑब्जेक्टिव पॉसिबल इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल हमें बेसिकली सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट व्हाट साइंटिफिक स्टडी ऑफ द हमें सोसाइटी को स्टडी करवा साइंटिफिक वे रे सेटा को कहा जाए सोशियोलॉजी अदरवाइज नॉर्मल सोसाइटी को जेमती स्टडी करा जाए सेमती जदि हमें स्टडी करवा ताहले हमको किसी कंक्लूजन बाहरिबनी यू आर स्टडीइंग इन द एम्पिरिकल वे दैट इज व्हाई एटा कहा गला कोन ना साइंटिफिक स्टडी रे कोन सोशियोलॉजी हमें यूज करि परिबा साइंटिफिक स्टडी रे कोन हमें सोशियोलॉजी यूज करि परिबा the objectivity refers to the ideal of the conducting research free from personal biases preconception or emotional so objectivity कोन गोटे रिसर्च करा होची रिसर्च जते आमे करूचु रियांशु वेरी गुड एक्सीलेंट यस वेरी गुड कीप ट्राइंग समस्ते कमेंट सेक्शन में जवाब देव ट्राई करो समस्ते समस्ते कमेंट सेक्शन में जवाब देव ट्राई करो ऑब्जेक्टिविटी रो डेफिनेशन आगे तुमको ये लिखियो पड़ो ओके सो ऑब्जेक्टिविटी कोन कहूची ना आमे गोटे काम करूचे व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिविटी पाठ पढुचो व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिविटी टू गेट द टारगेट है ना जोंडे कि जो टारगेट को अचीव करिया पई जो गोल को अचीव करिया पई तुम्हें तुम पर्सनल बायस को छाड़ मानि नियो तुम माइंड सेट अच्छी तुम सोसाइटी को स्टडी करिया जाउचो ओके तुम सोसाइटी को स्टडी करिया जाउचो कि भाई आम यही सोसाइटी स्टडी तुम माइंड सेट गोटे मुस्लिम सोसाइटी को स्टडी करिया जाउचो तुम्हें माइंड सेट अच्छी भाई मुस्लिम माने भाया हुअंती ऑटोमेटिकली प्री कनसीव्ड माइंड सेट अच्छी तुम तो तुम्हें कौन कर प्री कनसेप्शन तुम अच्छी तुम बायसनेस अच्छी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट अच्छी से कसिस तुम्हें ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करि परिबो नाही से कंडीशन रे तुम्हें वैल्यू फ्री हेई परिबो नाही तुम्हें फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस हेई परिबो नाही तो सेहिथि पई सोशल इमाल डरखाइम गोटे कांसेप्ट देथिले कोन सोशल फैक्ट्स एज ए थिंग माने एज इट इज फैक्ट्स को फैक्ट्स भलिया ही देखो ताकू तुम इमोशंस को सेठी अटैच करनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट या प्री कंसेप्शन को सेठी इंक्लूड करो नाही दैट इज व्हाई ही कॉल्ड सोशल फैक्ट्स एज ए थिंग्स टेक सोशल फैक्ट्स एज ए थिंग्स एम्फासाइज इंपोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एनालिसिस देखो मु कोन कली क्वेश्चंस रे तुम्हें नॉर्मल लिखी थिले कोन ना ऑब्जेक्टिविटी डेफिनेशन लिखी छाड़ी दी थांतो व्हाट आई हैव डन हियर इज आई हैव इंक्लूडेड द थिंकर बेसिक डिफरेंस बुझी पारछन नहीं बेसिक डिफरेंस हला कि आई हैव इंक्लूडेड द थिंकर्स ग्रेट थिंकर्स ऑफ द सोशियोलॉजी फादर ऑफ सोशियोलॉजी मॉडर्न सोशियोलॉजी right or wrong that is the beauty of writing the answer writing is slightly different knowing things is different and representing the way you need that is the way and complete objectivity is challenging to achieve great subjectivity देखो complete objectivity माने आमे केबे भी बायसनेस होबुनु केबे भी प्री कंसेप्शन माइंड रहिबोनी या इमोशनल इन्वॉल्वमेंट रहिबोना सेटा कंप्लीटली जो कट करवा also very difficult right or wrong
right or wrong? Also basically, so these are the things need to introduce, then तापर देखिवा कि possible or not, right? ये भले तुमको इंट्रोड्यूस करे, so ये ऑब्जेक्ट पॉसिबल इन सोशल साइंस किछि तार सपोर्टिंग एविडेंस रखिवा के थिंकर्स कहि तार अपोजिट को माने आर्गुमेंट अगेंस्ट। तो प्रथम है यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड माने कोन? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स अप्लाई करिवा, सर्वे करिवा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हला साइंटिफिक मेथड। ये कोन करे ना तुमरो मिनिमाइज करे सब्जेक्टिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्टिविटी? सब्जेक्टिविटी समथिंग जोंटा की तुमरो माइंड रो थॉट प्रोसेस रो आगरे वे अबव योर थॉट प्रोसेस। एज्यूम दैट तुमरो माइंड रो थॉट प्रोसेस को छाड़ी की जो डाटा पाइलो, जो सर्वे थ्रू रे डाटा पाइलो, स्टैटिस्टिक थ्रू रे डाटा पाइलो, सेही डाटा को यूज सेटा साइंटिफिक मेथड। सेथिरे तुमरो निजर माइंड एठी खर्च करिवो, निजर थॉट को एठी आनिबो नाही। जहा देखिलो सेही अनुसार, जेमती यू आर लाइक ए अंपायर इन द क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच रो बॉल आसिला गला विकेट को हिट करिवो एलबीडब्ल्यू। विकेट को हिट जदि न करथुबो, जदि एलबीडब्ल्यू देइ देबो, तुमर किछि माने माइंड ओडे इमोशंस अछि, ऑब्जेक्टिविटी नाही। यू आर नॉट फॉलोइंग दैट इज हियर। जदि अंपायर इंडिपेंडेंटली न्यूट्रल ही काम करिवो ताले माने से कोन करिवो? से ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करिवो, सब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज करिवो। केवल प्योर देखिवो आउट और आउट नुह। जदि कौन सी कंट्री सहित इंडिया नहीं तो इंडियन सहित कहबो कि नाइ भाई आउट होउनी, प्योर देखा जाउ तो कि सामना रो जाय कि बाजी छी अंडारे। सो एमिति ए सिचुएशन तो कंपैरेटिव मेथड दरखाइम कहले ब्रिंग रिगर कंपेयरिंग डिफरेंट सोसाइटीज एंड सिचुएशन। तो प्रथम कहले कि आर्गुमेंट सपोर्टिंग कहले कि साइंटिफिक मेथड यूज कले कौन हबो ना सब्जेक्टिविटी टा कमी जिवो। तो बेसिकली क्लियर आंसर भारिबो सर्वे मेथड रे हो, स्टैटिस्टिकल मेथड हो। आउ कोन कहले डरखाइम कोन कहले ना कंपैरेटिव मेथड अप्लाई करो। जणक सहित रिसर्च कलो, आउ जणे रिसर्च कला, ता जणे कंपेयर करो कि एई सोसाइटी एई सिचुएशन जेमति सी सुसाइड रो स्टडी करथले। तो डिफरेंट सोसाइटी एंड सिचुएशन, देन इंस्टीट्यूशनल चेक लाइक पीयर रिव्यू। मान्य तुमे जणे स्टडी करलो, तुम स्टडी ग्रुप रे 10 जण अछंती, तुमर से स्टडी को आउ जणे रिव्यू करला। जेमति तुमे मानि नियो कॉपी लेखिलो एग्जाम पाई, तुम एग्जाम कॉपीटा चेक कला आउ जणे मो सांग पीयर, ताको पीयर रिव्यू को जाय। स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी एंड ट्रायंगुलेशन ऑफ डाटा इंक्रीज स्टेबिलिटी। क्लियर गाइस? चलो ये ला सपोर्ट रे एमिति हेले केमिति ऑब्जेक्टिविटी अचीव अगेंस्ट कहले। देखो भाई मनीष मात्र रे तार गोटे मुंड अच्छी, मनीषर खुराफाती दिमाग अच्छी। तो जेमिति नेचुरल साइंस, सोशल साइंस से माने अलगा नेचर अनुसार से चलची। सोशल साइंस बट सोशल साइंस डील्स विथ द मीनिंग्स, वैल्यूज एंड इंटेंशन ऑफ द इंडिविजुअल। नेचुरल साइंस कौन ना सी किसी देखे नेचर अनुसार सी कॉज एंड इफेक्ट अनुसार हो जाए, बट सोशल साइंस से वैल्यू देखे, सी मीनिंग ताणे, तार इंटेंशन भी मध्य इंडिविजुअल डिपेंड करे। तो किए कहले कि मनीषर सब्जेक्टिविटी तार थॉट्स को, तार वैल्यू को, तार माइंडसेट को एते शीघ्र हटे दे पारिबो नाही, तार इंटेंशन को। वैल्यू लेडनलेस सब रिसर्च जो जी रिसर्चर करती गोटे आइडियोलोजी था, चाहे पॉलिटिकल आइडियोलोजी हो, रिलीजन आइडियोलोजी हो, ये सब थाए। तो किसी मात्रा तो रहिबो इन्फ्लुएंस हम। सिमिलरली इंटरप्रिटिविस्ट किए वेबर फूड्स, ये कौन कहले सोशल रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, so fully neutrality is important. This is practically basically used or practically accepted. Reality hela se. I Max Weber normally practical person.
मैक्स वेबर तुम्हें देखिबो ताले डरखाइम होंतु मार्क्स हो दीज आर एक्सट्रीमिस्ट बट ये वेबर बेसिकली तांको मझी मझी ओके वेबर को ये तो ये कहले कौन कि फुल्ली न्यूट्रालिटी केते पूरा पट सपट हबनी बोली कहीदेव এটা इम्पोसिबल नहीं माइंड चेंज हम तो थॉमस कुन्स पैराडिज्म थ्योरी सी कहले कौन साइंटिफिक इंक्वायरी इटसेल्फ shaped by dominant paradigm culture context limiting objects से कहले भाई तुम्हें जते इनक्वारी करो साइंटिफिक इनक्वारी ही मध्य गोटे कल्चरल कंटेक्स्ट रे हेची तो याकू केबे भी आमे लिमिट करि परिबा नहीं ऑब्जेक्टिविटी सम पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी लिमिट फुल्ली ऑब्जेक्टिविटी अचीव करिबा तो दीज आर बेसिकली केते मु एति जो कहूची तुम देखुछ ना नहीं सबुथिरे मु थिंकर्स को तांकर पर्सपेक्टिव को इंक्लूड करूची तो देखो तुम्हें गोटे सिंपल आंसर लिखि थांतो सिंपल आंसर लिखि थांतो कि लिखि थांतो ना साइंटिफिक स्टडी रे पॉसिबल नुह गोटे था गोटे पॉसिबल बट से जो पॉसिबल नुह आ पॉसिबल सेटा कहा के डिसाइड करिवो यू आर नॉट डिसाइडिंग यू आर नॉट रिसर्चर यू आर ए स्टूडेंट you need to write the thinker's point of view not on your own. That is the challenge, that is a problem many a student basically feel. They understand the theory and they're writing their own way. You cannot write everything in your own way. Here you have to justify through the thinker's school. Yes, you cannot write. तो सबुथिर मु तुमको आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट देखीदेली देन बैलेंस पर्सपेक्टिव काउंटर तो एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल इन सोसाइटी आम जानिले जणे कहले सपोर्टर जणे एग्नेस्ट ड्यू टू वैल्यू लाडेन नेचर ऑफ सोशल सब सोशल फेनोमेना कि वैल्यू इन ताकू डिफिकल्ट है कि आमे प्योरली एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी अचीव कर हाउएवर रिलेटिव ऑब्जेक्टिविटी कैन बी अचीव relative objective माने comparison with other studies by adopting rigorous scientific methods transparency and okay. Instead of aiming for total neutrality social scientists should strive for intersubjective agreements where findings are acceptable community of the scholars despite difference in the values से कौन कहले रिलेटिव ऑब्जेक्टिविटी अचीव केमिति रिगरस साइंटिफिक मेथड ट्रांसपेरेंसी ओके एंड हमें टोटल न्यूट्रलिटी प्रति ध्यान न देगी सोशल साइंटिस्ट कौन करिया दरकार कि इंटर सब्जेक्टिव एग्रीमेंट माने नॉट फुली ऑब्जेक्टिव नॉट फुली सब्जेक्टिव इंटर मझी जो कि जो एक्सेप्टेबल थिबो स्कॉलर माननकु या कम्युनिटी ऑफ स्कॉलर माननकु मानि नियो तुम रिसर्च कल कास्ट सिस्टम ऊपर रिसर्च करके आसिलो से जो तुम फाइंडिंग्सटा अदर स्कॉलर अदर कम्युनिटी स्कॉलर जी कि तुम एग्नेस्ट पार्टी भी होई पारंती या तुम सपोर्टिंग पार्टी भी होई पारंती सेमानंकु देखाओ जाइकी सेमानंकु जाइकी एक्सेप्ट होबा जरूरी दी जन जाक देखिए तुम अपोजिट वैल्यू एंड सेम वैल्यू क्लियर है then conclude objectivity in the study of social phenomena is an ideal rather than absolute reality while complete freedom from bias is unattainable systematic method methodological pluralism and critical self reflection can be reduced subjectivity enhance
Thus, social science can aspire to approximate objectivity, even if they can never fully replicate the objectivity of the बुझीगला ये कनक्लूजन भी बैलेंस्ड वे लिखा गला ऑब्जेक्टिविटी कौन कुआ गला आइडियल रियलिटी नुह दिस इज नॉट एब्सोल्यूट रियलिटी right complete freedom from the bias is unattainable systematic method methodological pluralism and critical self can be reduced subjectivity हमें यदि ठीक से स्टडी करिवा क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन रहिबो मेथोडोलॉजिकल प्लुरालिज्म रहिबो समस्त मिसिंग करिवा जणे डिसाइड करिवनी रिड्यूस करिवो क्रेडिबिलिटी को एनहांस thus social science can be aspire to approximate objectivity not absolute objectivity even if they can never fully replicate the objectivity of the natural science भलिया हमें exactly as it is objectivity achieve करिवा difficult possible नुह but हमें पाखापुखी ताको achieve approximate objectivity how केमती लागिला ये क्वेश्चन मु जानि किछि जे जानि थिबोनी जहाकू एटा बुझी नथिबो नमस्कार फिजिक्स ज्ञान तो केमिति लागिला जो एते एफर्ट देली क्वेश्चन से आंसर रे देखिलो ना कोन को एंगल हमें टच करले ओके आ गोटे क्वेश्चन देखिए प्रथम क्वेश्चन थिला हमें ताकू केमिति लिखले क्वेश्चन टा स्ट्रेट फॉरवर्ड थिला बट आंसर टा केते सुंदर भाव में आमे ताकू रेप्लिकेट करले डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ पैटर्न वेरिएबल मते वर्तमान को एटा भी पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आल्सो ए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कांसेप्ट ऑफ पैटर्न वेरिएबल के देथिले टालकट पार्सन ना नहीं टालकट पार्सन गिवन द कांसेप्ट ऑफ पैटर्न वेरिएबल एंड व्हाट आर द पैटर्न पांच प्रकार पैटर्न वेरिएबल देथिले राइट रॉन्ग 5 टाइप्स ऑफ पैटर्न वेरिएबल देथिले टालकट पार्सन रिसेंट सोशियोलॉजिस्ट 1950s अराउंड जे कि अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट टालकट पार्सन so what do you mean by pattern variable जोटा कि गोटे पैटर्न जे कि वेरी कर कौन कौन पैटर्न वेरिएबल so the concept of pattern variable introduced by देखो ये क्वेश्चंस रे कीवर्ड कौन तो कीवर्ड है पैटर्न वेरिएबल तो वर्तमान आमे कहा विषय लिखिबा पैटर्न वेरिएबल डायरेक्ट एग्जांपल प्रति जीवा मैं कांसेप्ट ऑफ पैटर्न वेरिएबल आगे लिखिबा एवं ता पूर्व तार डेफिनेशन लिखिबा व्हाट इज पैटर्न वेरिएबल द कांसेप्ट ऑफ पैटर्न इंट्रोड्यूस्ड बाय टालकट पार्सन ए लीडिंग अमेरिकन सोशलिस्ट मेजर फिगर इन द स्ट्रक्चरल फंक्शन ये भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जोंटे कि डरखाइम भलिया यस नारायण तुम एटा बुझी पार नथो मु जो भलिया कहली बुझी पार नथो जदी फर्स्ट क्लास बट जी सोशियोलॉजी पढ़ी खास करके ये बहुत ही हेल्प हम तुम सांग साथी जी मेंस दउचंदी एथर या मेंस आशायी अछंती तांगर मार्क्स अनुसार भाबुचंदी कि मेंस लेखिबा को जाउचंदी प्रिपेयर करूचंदी पढ़ी सारचंदी तांको पई ये क्लासेस बहुत ही बढ़िया क्लासेस रहइबो से माननको बेसिकली जानि परिबे कि केमिति आंसर लेखिबा पैटर्न वेरिएबल कीवर्ड हमें पैटर्न वेरिएबल देखिले एंड पैटर्न वेरिएबल कौन ना सेट ऑफ dichotomies that is pair of choices dichotomy जानिजो that describe the fundamental dilemma
individual face when interacting with the social. सेमती गोटे छोटिया एग्जांपल देले बुझी जीवो बहुत सारा वेरिएबल्स अछि गोटे हला मानि नियो तुमे घरे अछ तुमरो बिहेवियर मोर सांग साथी सहित अलगा मोर गर्लफ्रेंड सहित अलगा मो घर सहित अलगा तुमरो कॉलेज या स्कूल टीचर सहित अलगा ना नहीं तुमरो जो डिलेमा इंडिविजुअल ने गोटे इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल अलग अलग जगह सी इंटरेक्ट करे तार वेरिएबल तार वेरिएशन भी हुए तार थॉट प्रोसेस वेरिएशन हुए तार बिहेवियर भी वेरिएशन हुए ये अलग प्रकार बिहेव करे राइट और रॉन्ग है ना नहीं तो ये गोटे वेरिएबल पैटर्न आनी चाहिए तो कौन ना इंडिविजुअल फेस व्हेन इंटरेक्टिंग इन ए सोशल सिस्टम they represent contracting orientations of action how people behave or are expected to behave in different situations. Parsons argued that social action is not random. Argued that social action is not random. It follows pattern. पैटर्न फॉलो करे से कहले कि मन इच्छा नहीं कि तो देखो तुम्हें तुमर बिहेवियर तुमर घर रे जो बिहेवियर गोटे पैटर्न अछि ऑफिस रे कॉलेज रे सार मान को सामने गोटे बिहेवियर अलग अछि Parsons argued that social action is not random मन इच्छा ये गोटे पैटर्न फॉलो करे सेव्ड बाय कल्चरल वैल्यूज आमे पिला बेलू सेटा शिखा दिए अरे देख तो अजा अछंती अजा सहित एमती बिहेव करिवु मामू सहित एमती बिहेव करिवु मौसा सहित एमती बिहेव करिवु भिणई सहित एमती बिहेव करिवु वैल्यू कल्चर रु हमर आसी कल्चरल वैल्यू रु आसी पिला बेलू वी लर्न एंड इट सेव्ड thus pattern variable help us understand how value influence social rules and relations. Right or wrong? बुझिएला समझते हाई पैटर्न वेरिएबल देथिले गोटेला इफेक्टिव न्यूट्रलिटी आ गोटेला इफेक्टिव दिस वेरिएबल कंसर्न द डिग्री ऑफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट appropriate in a given social interaction appropriate in a given social interaction first है effective neutrality effective neutral माने न्यूट्रल रहिबे एठी एम्फासिस करिवो इमोशनल डिटैचमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी इमोशनल डिटैचमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी getting or not effectivity ये इमोशनल एक्सप्रेस को अलाउ करिवो एंड पर्सनल इन्वॉल्वमेंट डिटैचमेंट है ऑब्जेक्टिविटी को एटी अचीव करिया पे ट्राई करिवो एटी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इमोशनल एक्सप्रेस को अलाउ करिवो जे देखिबा एग्जांपल हैला ए डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप टिपिकली रिक्वायर इफेक्टिव न्यूट्रलिटी काई ना जे डॉक्टर जदी कांदी जीवो काटू काटू से जेमती कांदुथुवो से इफेक्टिव न्यूट्रलिटी अचीव करिया दरकार ना नहीं टू ensure unbiased medical care to ensure unbiased medical care in contrast a patient child relationship characterized by affectivity requiring emotional connection and nurturing patient child relationship affectivity दरकार emotional expression personal involvement दरकार डॉक्टर पेशेंट भितर effective neutrality getting or not केमिति सोसाइटी भितर आमे रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करिचु getting or not
Then self orientation versus collectivism, collectivity orientation. Self orientation versus collectivity orientation. So self orientation करना focuses on individual goals and personal gratification. Self निज कथा भावी गोटे बिजनेस स्टार्ट करिच तार मेन कौन प्राइमरीली सेल्फ ओरिएंटेशन थाए. देन कलेक्टिविटी ओरिएंटेशन कौन ना प्रायोरिटाइज द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर ग्रुप ऑफ द कम्युनिटी. जेतेबेले जने निजे गोटे एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करिछि स्टार्ट करि ताको निज बिजनेस प्राइमरीली सेल्फ ओरिएंटेड थिबो. while community organizer working on a social project से कौन जानिबो exhibit collectivity orientation. exhibit collectivity orientation. Getting or not? Self orientation and collective these are देखो these are straight forward but कथा ये क्वेश्चंस रे हमें एग्जांपल सो न लिखले तुम मार्क्स पाइबो ना. देन यूनिवर्सलिज्म एंड पर्टिकुलरिज्म. बेसिकली यूनिवर्सलिज्म कौन ना यूनिवर्सलिज्म जोटा कि जनरल हो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया टू ऑल तो बड़ा समान. पर्टिकुलरिज्म गोटे स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस रो रिलेशनशिप जेंति कि स्टैंडर्ड हैला कोन ना गोटे लॉ अप्लाई टू एवरीवन सेम इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ आगरे समस्त समान ता माने एवरीवन इज इक्वल बिफोर द सेटा जनरल. स्पेसिफिक कोन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन का करिवो ये अनइक्वल अछि. तो जैसे पॉलिटी पढ़ी तुम यहाँ बुझी पार्थो आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन apply general standardized criteria to all situations. Particularism consider specific circumstances and personal relationship in the judge apply the law equally to all case represent universal. The small town official making exception based on personal knowledge of the individual simplify particular case. Similarly, achievement oriented versus ascription oriented. achievement oriented माने इंडिविजुअल सही समय बेस्ड ऑन देयर अकम्प्लिशमेंट एंड एक्वायर्ड स्किल से तार स्किल जेमती आज ओएस हम अचीवमेंट. ओके जोटा कि तुम अचीवमेंट जहाँ है सहीटा तुम स्किल अनुसार तुम अकम्प्लिश अनुसार तुम एफर्ट अनुसार तुम एस्क्रिप्शन कौन ना बाय बर्थ इनहेरेंट क्वालिटी तुमको एसाइन हो. ओके जमती जेंडर बाय मेल मेल माने तुम गोटे सर्टन एडवांटेज अच्छी फीमेल गोटे डिसएडवांटेज अच्छी. तो ये सब बेसिकली एस्क्रिप्शन बेस्ड प्रीडिटरमाइंड फैक्टर एज हो जेंडर सोशल क्लासेस ये प्रीडिटरमाइंड रिच पुअर कास्ट आर ऑल एस्क्रिप्शन बेस्ड. अचीवमेंट बेस्ड क्लास बेसिकली जोटा कि स्किल बेसिस मोर हार्डवर्क बेसिस स्मार्ट वर्क बेसिस अचीव कर. देन एग्जांपल देखो मेरिटोक्रेटिक हायरिंग प्रोसेस इज कंपनी रिप्रेजेंट अचीवमेंट ओरिएंटेशन वाले हेरिडिटरी मोनार्की एम्बॉडीज एस्क्रिप्शन चलची अंश ये रु okay very good guys. Then next specificity versus this variable relates to scope and nature of social relations. Specificity involves limited well defined interaction focused on particular purpose. Specific okay जेमिति मान लियो कस्टमर सेल पर्सन इंटरेक्शन स्पेसिफिक रिलेशन फ्रेंडशिप जेमिति फैमिली रिलेशन एटा हला डिफ्यूज बहुत सारा रिलेशंस अछि फैमिली रे गोटे रिलेशन नाही तो फैमिली भीतर बहुत सारा रिलेशंस अछि.
फ्रेंडशिप बहुत सारा रिलेशन प्ले करती। तो स्पेसिफिसिटी जोटा कि वेल डिफाइंड इंटरेक्शन जोटा कि सेल्स पर्सन कस्टमर गोटे टाइप किଣା बिकार रिलेशन। ओके स्पेसिफिक एंड फ्रेंडशिप है फ्रेंडशिप किसी स्पेसिफिक अच्छी किसी भी शेयर कर किसी भी कथा हो फैमिली रिलेशनशिप। दिस इज 5 टाइप्स ऑफ बेसिकली पैटर्न वेरिएबल गिवन बाय Talcott Parsons and Tarkano. So pattern where we explain the rule expectation in family, education, polity, and economy. They highlighted the tension between the traditional and modern society. The traditional society now more oriented toward ascription, oriented, particularism, and effective. And modern society more oriented towards achievement oriented, universalism oriented, specific oriented, and new. Here, next, I would question: define social distance and describe the important characteristics. Define social distance. बुझीपाला आम दुटा क्वेश्चन कले बढ़िया वे रे कले केमी आम लेख एमती क्वेश्चन जमी तुम्हें भल से कर समस्त लाइक शेयर कर तुम सांगसाथी सहित शेयर कर जो मैंने खास करके मेन्स दौरान कि जो मैंने पढ़ी सारी सोशियोलॉजी ये काम आसो केमी लेखिले भल मार्क्स मिल। डिफाइन सोशल डिस्टेंस एंड डिस्क्राइब द इंपोर्टेंट फैक्ट। सोशल डिस्टेंस रेफर्स टू social distance refer to the degree of close or remoteness and distance पर individuals or group feels toward one another। ये सब तार किसी जार डाउट अच्छी किसी पचारि पार समस्ते चुपचाप रुहनी किसी पचार। सोशल डिस्टेंस कौन ना डिग्री ऑफ क्लोजनेस और रिमोटनेस डिस्टेंस पाखरे अच्छो या दूर रे अच्छो रिमोट रे अच्छो। चलो ग्रुप्स feel towards one another in self simple terms indicates कौन केते पाखरे अच्छो या दूर रे अच्छो सोशियली इति कालीनु degree of closeness or remoteness is not on the basis of physics, basis of sociologist Emrois S. Bogardus, Emrois S. Bogardus 1920 first conceptualized and measured social distance for the Bogardus social distance, which assesses people's willingness to engage in varying degree of social relation, engage in varying degree of social. Example, the neighbors, friends, and marriage patterns, members of different. बोगार्दुस कौन कहले बेसिकली प्रथम थर पर ये कॉन्सेप्ट आनी कि सोशल डिस्टेंस कि केमिति मेजर करवा गोटे स्केल को कह जाए बोगार्दुस सोशल डिस्टेंस स्केल से सी कौन ना पीपुल को एंगेज करेंगे कि डिफरेंट पीपुल को आनिक डिफरेंट जगह एक्टिविटी एंगेज करेंगे भर सोशल रिलेशनशिप केमती अच्छा चाहे तार पाख लोक हो फ्रेंड हो मैरेज पैटर्न हो ये सब विथ मेंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप ये समस्त सहित मिसेबे मिसिकी सी मेजर करेंगे कि एक्चुअली रियली भर कौन केमती कौन इंटरेक्शन रही। तो देखा तो सोशल डिस्टेंस रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ इंटीमेसी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन between individuals or social. It often arises due to difference in class, caste, race, religion, ethnicity. नारायण सबू थिंकर कॉन्सेप्ट को
जो कॉन्सेप्ट आम सोसाइटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट किसी किसी थिंकर कहते देखो मेजर थिंकर 15 जन 20 जन खंडे थिंकर एंड मेजर 5 थिंकर अच्छा 5 जन थिंकर देन तापरे आउ किसी थिंकर अच्छा जोटा कि किसी जगह दरकार पड़े तो 20-25 थिंकर जदि ठीक से माइंड रहा ताले तुमको हम और आंसर भी भल लिखिपर sorry social reflect distance reflect the level of intimacy acceptance or rejection between individuals or social groups. It often arises due to difference in class, caste, race, religion, ethnicity or culture. Class difference ही पारे, caste difference ही पारे, race difference ही पारे, religion difference ही पारे, ethnicity ही पारे और culture. For example, कौन देखिए higher social distance exists between upper and lower caste. A caste-based society. Lower social distance exists among the member of same culture or ethnic background. Higher social distance कौन देखियो upper caste और lower caste भीतर बहुत difference था सोसाइटी रे ते untouchables होंतु देन ब्राह्मण तांको भीतर बेसिकली बहुत ही डिफरेंस था लुइस डोमंड जेमती कहिथिले कि प्यूरिटी एंड पियर प्यूरिटी एंड पोल्यूशन ता ऊपर the lower social distance exists among the members of the same cultural or ethnic background. सेम ग्रुप रे सेम कास्ट सेम एथनिक सेम रेस रु टिके दि सोशल डिस्टेंस बहुत कम था तो कैरेक्टरिस्टिक है गोटेला साइकोलॉजिकल इन नेचर वेरी वेरी इंपोर्टेंट से साइकोलॉजी हमें कास्ट बेसिस रे जो डिस्क्रिमिनेशन करू छु छुआ छु तो साइकोलॉजी सोशल डिस्टेंस इज नॉट अबाउट फिजिकल स्पेस बट अबाउट मेंटल एटीट्यूड एंड इमोशनल फीलिंग ऑफ द कनेक्टनेस और सेपरेट देन रिलेटिव डायनामिक्स मेंटल कंस्ट्रक्ट इमोशनल फीलिंग कहा केते क्लोज अच्छे कहा सेपरेट अच्छे रिलेटिव एंड डायनामिक्स it varies from one context to another and can change over the time depending on social interaction and experience. Then based on basically relative case रे समय अनुसार चेंज हो जाए कि केमिति इंटरेक्शन होची केमिति एक्सपीरियंस होची रिक्वायरमेंट कोन कोन अछि देन बेस्ड ऑन सोशल डिफरेंस often arises from culture religion class and social distinction leading to social segregation and discrimination चाहे रिलीजन अलगा होंतु चाहे का क्लास अलगा होंतु रेस लुक वाइज अलगा होंतु इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देन एक्सप्रेशन थ्रू सोशल बिहेवियर express the social behavior. It is reflected in pattern of the interaction. How people marry, befriend, employ, or live near. Indicator of social integration or disintegration. कौन indicator? Lesser social distance suggests social harmony, integration. यदि social distance कम थाए समस्ते मिलमिशी थांती ताम तांको भीतर गोटे खुशी थाए हार्मनी इंटीग्रेशन ही थाए while greater distance implies prejudice थाए inequality थाए exclusion थाए जोंटी देखिबो जो मु कहली कि ब्राह्मण आउ या हिंदू मुस्लिम आउ ब्राह्मण आउ अनटचेबल्स हो देन मेजरेबल कांसेप्ट कोन थ्रो द Bogados social distance scale sociologists can empirically measure people's willingness to interact across the distance स्केल किसी लोक पचारे जाएगी कि तुम्हें या सहित कथा चाहो तुम एक पर्टिकुलर कास्ट कौन तुम रेस कौन तुम रिलीजन कौन ये सब आइडेंटिफाई कला जना पड़ जाको डाटा पुट करदे कि भाई यही पर्टिकुलर लोक सहित से इंटरेक्ट करिया आमर अनटचेबल प्रैक्टिस आमर एज लॉन्ग अच्छी बहुत so these are basically से questions थिला कोन define social distance describe the important characteristics these are the important characteristics of social distance and finally conclusion social distance is a vital concept in understanding the social relations prejudice group dynamics society reducing social distance through education intergroup contact and inclusive policies
promote social cohesion, equality and national in these are basically थिला social distance तो मोर ये थिला social distance या पूर्व क्वेश्चन थिला पैटर्न वेरिएबल्स उपरे या कुछ पूर्व क्वेश्चन थिला वैल्यू न्यूट्रलिटी ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिविटी उपरे क्वेश्चन तो आमे केमिति सॉल्व कले वन बाय वन क्वेश्चन then what is distance between sex and called what is distance between sex and called या मैं नेक्स्ट क्लास से देखिबा ये देखो थिंकर्स मु केमिति सब आडे किछि ना किछि थिंकर्स इंक्लूड करी के लिख so that then what is the relationship between authority and legitimacy ये भी मैक्स वेबर बिना ये भी हमें लिखि परिबा नहीं तो काली आमे करिवा काली करिवा सो सोशियोलॉजी रो फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट हो जाईची सोशियोलॉजी रो फाउंडेशन बैचेस आज टू स्टार्ट होईची जो माने फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट जॉइन करिया चाहते जॉइन करि परिबे एवं ऑप्शनल मेंटरशिप प्रोग्राम जोथरे आपनकर मु पीवाई सहित वैल्यू एडिशन देबी एंड एज वेल एज टेस्ट सीरीज इंक्लूड हबो सो सेइथरे भी माध्य जॉइन करी मात्र टेस्ट सीरीज जदी खाली नेबे 4000 टका पड़िबो प्लस मेंटरशिप नेले 4000 देन दीटा कंबाइन नेले मात्र 6900 पाई परिबे सो दिस इज वेरी रिजनेबल प्राइस रे आपण पाई परिबे देन जीएस रो भी टेस्ट सीरीज रहउची 25 टा टेस्ट रहउची जीएस रो एंड जीएस रो टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप रहउची जोटा कि एबे दीटा मिसेल मात्र 7999 सी भी आपण चाहिले नै परिबे तो समस्ते ट्राई करंतु आपण संग साथी जणांतु आमे जेति कि दउचु जेति कि आमे ट्राई करूचु आपण मानक पई आपण माने जेमदी भलो से सक्सेसफुल हेबे आपण लाइफ रे समस्ते ये करंतु मु आगो को जीएस रो डिस्कशन क्लासेस आणुची आ आधा घंटा परे टिल देन बाय बाय गाइस टेक केयर गॉड ब्लेस यू